So now you have written that question, systems approach. ठीक है. Systems approach came last year? No? No? So normally it will be important if it has not come last year. Systems approach. And the question was that systems approach does not fulfill even the fundamental precepts of systems approach. What is fundamental precepts of system approach? Pardon? Input, output, yeah, fundamental, we can say ideas, yeah, fundamental assumptions, themes on which the system approaches, means it does not fulfill the requirement of a systems approach as such. This is what is the theme. So once this question was asked, otherwise you should be prepared for critically examine the systems approach or what are the limitations of system approach. You have to write that first, and fundamental precepts, how to handle this, that I'll tell later. So in systems approach, suppose critically examine systems approach of Morton Kaplan, what all information you have. So first information is a positivist approach. Okay, so you can take the points. Positivist approach. Second point is influenced by general systems theory. In general, and Easton's theory in particular. Next, you should explain the fundamental precepts of the systems approach. ठीक है? तो write the fundamental precepts of the system approach are. So first of all, fundamental precept, yeah, why we take system approach. So according to those who have developed system approach, they believe that systems approach can be used to develop scientific theories in social sciences. तो पहला fundamental assumption is what? ठीक है, तो systems approach का ये belief है कि when you adopt systems approach, you can develop the scientific theory. Okay, so first, right, it is based on the precept that scientific theories can be built on the basis of systems approach. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, लिखो राइट, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स systems approach has been developed by scholars like Morton Kaplan, and
Charles McClelland. Charles McClelland. कभी कभी ऐसे जनरली मान लो आए तो वैसे कैनेथ वॉल्स का भी सिस्टम्स अप्रोच है, ठीक है, बट उसमें ही हैज अप्लाइड द नॉर्मेटिव, और ये वाला प्योर साइंटिफिक वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू राइट. नेक्स्ट राइट one of the one of the major contribution in systems approach is of Kaplan, Kaplan in his book का नाम लिखने से अच्छा रहता है, ठीक है, in his book, write the title of the book, Systems and Processes in International Politics. Held that international relations offer the best place for the application of systems approach. Underline कर दो इसको. So he believed that the best model can come in international politics, and international politics can be described in the best way through systems approach. ठीक है, अब फिर दूसरे fundamental precepts. तो fundamental precepts में you discuss the basic concept of system, ठीक है, और एक fundamental precept हो गया for the scientific theory, we can go for systems approach. Is this clear? So systems approach is based on following precepts or assumptions. First, concept of system. Dash करके, what the system denotes? Set of elements in the state of interaction. Okay, concept of system. Second क्या है? Every system has its environment and boundary. Next, in every system और क्या होता है? It is structures and processes. There are structures and processes. Actually input output लिखने की ज़रूरत नहीं है, because input output is a special characteristic of political system. और political system का input है demand, output is authoritative allocation of values. तो थोड़ा we will use general term. Systems has structures and processes. It can be any. Is this clear? So these are some basic. And next there is a observable regularity. Third point ये है कि every system has structures and processes. ठीक है, तो specifically ऐसे मत लिखो input output, सिर्फ इतना ही keep it like that. Next is, what is the next one? There is a observable regularity on the basis of which theory building can be done. ठीक है,
Now you write contribution of Kaplan. उतना डिटेल की जरूरत नहीं ना. अगर पॉलिटिकल सिस्टम आए देन यू डिस्कस फीडबैक एंड ऑल. ठीक है. बहुत at very general level we have to talk fundamental precepts, processes, structures, environment, boundary. ठीक है. Now Morton Kaplan's contribution. Right. Morton Kaplan has explained the concept of system and its purpose in his book ठीक है. इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो उसका. राइट. इट राइट सिस्टम इज अ एनालिटिकल एंटिटी. Analytical entity, 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 comma, which explain the behavior of actors and regulative, comma, integrative and disintegrative consequences of their policies. तो बाकी चीज़ें तो याद है. ये थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाने के लिए ऐसे लिखने से यू विल गेट बेटर मार्क्स. ठीक है. ये उसके अपने वर्ड्स हैं. दिस इज हाउ ही हैज एक्सप्लेन. तो थोड़ी मेहनत तो कर ही लोगे. हाँ, याद तो कर सकते हो ना. अभी तो रटने का टाइम अभी ही है. ठीक है. तो अगर कैप्लान आता है इसको करने से यू विल गेट अ मच बेटर मार्क्स क्योंकि यू आर एक्सप्लेनिंग. ऐसे लगेगा कि उसकी बुक से पढ़ के यू हैव. ठीक है. इसी से वो स्टार्ट करता है. दैट्स वाई. ठीक है. तो ये इतना याद कर लेना. राइट. नेक्स्ट. फिर नेक्स्ट लिखो. राइट. कैप्लान has developed initially 6 models and later on 4 additional models to understand international politics, right. He has also given 5 essential rules. Yeah, every system has 5 essential variables या rules or variables. इसमें first write essential rules. Next, transformation rules, how changes. Actor variables. Capability variables. And information variables. फिर उसके मॉडल एक्सप्लेन कर देना. एक्सप्लेन मॉडल्स. मॉडल्स कौन कौन से हैं? बैलेंस ऑफ पावर, बाइपोलर, टाइट, वेरी टाइट, लूज, वेरी लूज, यूनिट वीटो, हायरार्किकल सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, इनकम्प्लीट डिफ्यूजन मॉडल. तो थोड़ा सा मॉडल एक्सप्लेन करके या यू मेक डायग्राम्स. ठीक है. दीज आर सम मॉडल्स. उसके बाद राइट क्रिटिसिजम्स. क्रिटिसिज्म तो
तो क्रिटिसिज्म ऑफ सिस्टम्स या मॉर्टन कैप्लान का क्रिटिसिज्म फर्स्ट किया है लीबर, Leiber, लीबर, रॉबर्ट लीबर, Lieber. तो इन्होंने क्या क्रिटिसिज्म किया है? राइट, फर्स्ट, इट इज हार्डली of theoretical importance, यहाँ चलो, comma, right, it is nothing more than conceptual framework. तो इसका इन जनरल चाहे ईस्टर्न का या सबके मॉडल का एक यही क्रिटिसिज्म है कि इट इज़ मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इट डजंट बिल्ड द थ्योरी एट ऑल. व्हाट एल्स इज द क्रिटिसिज्म? राइट, देयर इज अ गैप बिटवीन theory and practice. Which means empirical testing of his models is not possible. Next, has not taken domestic variables, historical variables, ideological variables, फिर उसका एक और है कि some models are hypothetical. And formation is arbitrary. फॉर्मेशन इज आर्बिट्ररी मतलब ऐसे तो 1000 मॉडल बना सकते हो अगर आर्बिट्ररी बनाने हैं, ठीक है, या हाइपोथेटिकल बनाने तो 10 ही क्यों बनाए? यू कैन मेक 100 मॉडल्स. तो कैसे है वाई ओनली 10? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल सच थिंग्स. एंड नेक्स्ट, ही डज नॉट गो बियॉन्ड द लेवल ऑफ डेफिनेशन. जैसे दिस इज बाइपोलर मॉडल, दिस इज दिस, what happens, why one model changes into the other model, it has no explanatory importance, ठीक है, doesn't go beyond definition. and इसी के बाद इसमें लिखो, right, it hardly tells why system will change, from where the change will originate, ठीक है. तो लीबर का क्रिटिसिज्म याद रखना, यही मेन है, ठीक है. अब what was the fundamental precept of systems approach? You can make a scientific theory, and what he has done, he could not produce anything beyond some arbitrary or hypothetical models having little explanatory importance and is far from the building of theory. Plus, a systems approach expect to show the cause and effect relation between the structures and processes. There is no such description. Have you understood this? So you can write this on the basis of Lieber's criticism. Lieber's criticism, we can suggest that it does not fulfill the fundamental precepts
प्रीसेप्ट्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? गोल्स, उद्देश्य, गोल, प्रीसेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स अप्रोच. The fundamental precept is building scientific theory. Building scientific theory. Explain cause and effect. Explain cause and effect. Establish the correlation. Among different variables. अभी इसका आंसर समझ में आया? ठीक है, तो है तो वही, लेकिन बस घुमा के पूछा उन्होंने. तो व्हाट इज फंडामेंटल प्रिसेप्ट थियरी बिल्डिंग करनी चाहिए थी, और वो भी कौन सी? साइंटिफिक. ठीक है. एंड हिज मॉडल वाज क्रिटिसाइज्ड बाय समबडी एज ए स्ट्रेंज पार्लर गेम. हेडले बुल, स्टैनले हॉफमैन. जब इवन नोट्स में ही होगा, मतलब यू कैन से दैट, राइट. हेंस his model is also criticized as the strange parlor game. Strange parlor game. अब इसमें कुछ और critics लिख लो. You write McClelland. McClelland. मैकलिलैंड के हिसाब से भी मॉडल बहुत ही ज़्यादा जनरल मॉडल है, तो उनका कोई कॉन्क्रीट सिग्निफिकेंस ही नहीं है. इफ यू कम टू नो बाइपोलर मॉडल, लूज बाइपोलर, इज दिस क्लियर? तो ही सेज दैट हिज मॉडल्स आर टू जनरल टू बी ऑफ एनी यूज इन प्रैक्टिस. Next, Headley bull. Nothing more than intellectual exercise. Next is Stanley Hoffman. Right. From his work, there is a long road to theory. एक और लिख लो, Ernst Haas. There is a long road to theory. Ernst Haas, ERNST, Ernst Haas. Right. Ernst Haas. He has ignored the subnational factors. अब लिखो एक और, अगर मॉर्टन कैप्लान का आता है तो इनके ऊपर खत्म करना. के.ई. बोल्डिंग और केनेथ बोल्डिंग. के.ई. बोल्डिंग, BOULDING. Right. Kaplan's work is important for the trail, TRAIL, trail it breaks, rather than goal it achieves. Trail it breaks, comma, rather than breaks.
मतलब एक जो ट्रेडिशनलिज्म का स्टोरी चल रहा था वो ब्रेक किया है केवल, बट नॉट फॉर building any scientific theory. So his model is important for the trail it breaks rather than goal it achieves. ठीक है, right. Bolding considers Kaplan's work important despite inadequacies. Right, inadequacies are understandable in any discipline which is in the state of evolution. Right. Kaplan's model can be considered as a step forward, comma, though it has a pigeonholes. Yet the effort is certainly more than giving fancy names. ठीक है, और जैसे फंडामेंटल प्रीसेप्ट्स, इट डज नॉट फुलफिल द फंडामेंटल प्रीसेप्ट्स, उसमें एक और स्कॉलर का एनालिसिस लिखो, जॉन बर्टन. जॉन बर्टन, इनका भी क्रिटिसिज्म लिख लो. First, in systems approach, we have to find out patterned relations. Among different units. Point number 2. Systems approach in international politics. Cannot be confined only to the analysis of interstate relations. Next, right, there are obvious limitations in developing scientific theory. There are obvious limitations in developing scientific theory in international relations. And experience, insight or creativity can be more helpful. Right, next, systems approach should not be seen as a fashion. For new jargons, fashion or excuse for new jargons. Should be used as a tool to understand
the complexities. तो अभी ये आंसर हो पाएगा. अगर मान लो ये नहीं आया तो जनरल में तो सारे क्रिटिसिजम्स लिख सकते हो, वो देख लेना. हु सेड पार्लर गेम एंड ऑल. नाउ आई फॉरगॉट. सो अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो लिखा है लिबरल थियरीज. Right? Do you agree that liberal international theories are essentially Eurocentric and not necessarily imperialist? So this is a question which demands your judgment. So what is your judgment about it? Are the liberal theories imperialist? No, Eurocentric. Who will say liberal theories are Eurocentric? Post-colonial. And who will say liberal theories are imperialist? Marxist. Now what you will say? Huh? Matter of debate. और मतलब बस डिबेट. तुम्हारे हिसाब से क्या है लिबरल थियरी? तो इसका आंसर का क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या बताओगे? सबसे पहले लिबरल थियरी. तो फर्स्ट में स्ट्रक्चर केवल लिखो. इंट्रोड्यूस लिबरल थियरी. कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? तो यू कैन राइट दैट लिबरलिज्म ऑब्लिक आइडियलिज्म has been the first school of international politics. फिर उसके intellectual precursors डाल दो. Right? It is based on the ideas of John Locke, Immanuel Kant, Norman Angell, Richard Cobden. Or right, its origin is in search for peace and alternative to power politics. फिर prominent theories in liberalism are एक तो institutionalism, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंटरडिपेंडेंस, वो सब एक्सप्लेन कर देना. सब में दो दो लाइन. और थिंकर, इतना तो लिख ही सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू एग्री दैट लिबरल इंटरनेशनल थियरीज आर एसेंशियली यूरोसेंट्रिक एंड नॉट नेसेसरीली इंपीरियलिस्ट? तो इसमें सब हेडिंग ऐसे डाल के, लिबरल थियरीज एज इंपीरियलिस्ट. Who calls liberal theory as imperialist? Okay. So write
right, Marxist scholars call liberal theories as imperialists. Right, liberalism is a philosophical dimension of capitalism. Philosophical dimension of capitalism. फिर लिखो liberal prescriptions are increasing interdependence, promotion of free trade, democracy, ठीक है, ये सब उनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ट्रेडिंग स्टेट, दिस दैट, राइट, right, the promotion, right, the idea of promoting free trade has been seen by Marxist scholars as essentially imperialist. For example, Immanuel Wallerstein in his world system theory has shown how capitalism has become the world system and how an international division of labor has emerged. Right, there is a continuation of drain of wealth from peripheries to the core countries. Right, next. Right, the scholars of dependency school like A.G. Frank, Samir Amin, also pointed towards the unequal exchange and development of underdevelopment. Next, Robert Cox has applied Gramscian perspective to show how Britain and USA have legitimized their hegemony in the name of free trade, democracy and human rights. Comma, building the world order which benefit
these countries. अब नेक्स्ट सब हेडिंग में लिखना पड़ेगा लिबरल थियरीज एज यूरोसेंट्रिक. Right, liberal theories as Eurocentric is the analysis of post-colonial scholars right. Post-colonialism is an effort by the scholars of third world countries to decolonize the discipline of international relations right. The prominent scholars include, उनका सबका नाम तो पता ही है, एडवर्ड साइड, होमी भाभा, मोहम्मद आयूब, डॉट डॉट करके भूपिंदर बरार एंड ऑल, इन सबका लिख सकते हो राइट. अकॉर्डिंग टू देम ऑल मेन स्ट्रीम थियरीज realism, liberalism, Marxism, and even social constructivism are Eurocentric. Right, they emerged in the West. They are written from the perspective of Western countries. Their analysis and prescription may not be suitable for the conditions prevailing in post-colonial societies. Right, for example, liberals suggest free trade as a solution for development in these societies. But solution may not be based on the real understanding of the causes of poverty. Right, next paragraph. अब अपना position ले लो, right? Whether liberal theories are imperialist or Eurocentric will remain a matter of debate.
So write since the beginning of postmodernist approach, the nature of the discipline has got democratized, comma, along with the meta narratives for example, liberalism is an effort to establish peace, comma, multiple narratives for example, liberalism is Eurocentric, imperialist, masculinist, are accommodated within the discipline. ठीक है, तो अब ये तो डिफरेंट उसमें यू कैन नॉट से व्हाट इट इज पीस, दे आर ऑल, liberalism is imperialist is also a discourse, Eurocentric is also a discourse, theory for peace is also a discourse, and we'll never come to know what it is. ठीक है, तो theory के most probably सारे question हो गए. Any question you ask from you want to ask? तो अभी ये वाले नोट्स को पहले याद करो, ठीक है, क्लास नोट्स तो पढ़ के आए होगे अभी, लेकिन इसको ही याद करो बार बार और डेली लिखने की कोशिश करो. इज दैट क्लियर? सो नो अदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक? या स्ट्रेंज पार्लर गेम मतलब वो कह रहे हैं वीडियो गेम टाइप, ऐसे बनाए कुछ मॉडल्स, उसका कोई रेलेवेंस नहीं. कहाँ से दिया? हमने दिया? अच्छा अच्छा, लिखो एक और अच्छा, write this question, explain how Deutsch model explains DUTSCH, Deutsch model explains the framework of international interdependence. How basically explain how far Deutsch model explain the framework of international interdependence. Full stop. Do you think that the processes of interdependence and integration have grown steadily, STADILY, steadily in post-Cold War globalization trajectory? ये हो जाएगा क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन हाउ फार. हाउ फार मतलब कहाँ तक, तो वो है ठीक, मतलब
truly. How far मतलब कहाँ तक? Fine. His model explains the framework of international interdependence. क्या लिखोगे? सही है. हाँ, हाँ? आंसर बताओ इसका. ऐसा कोई है जिसे आता है इसका आंसर? इसका आंसर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ, मॉडल ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी. हमको पहली लाइन बताया करो. स्टार्ट कर दो यहाँ से बताना. यस. तुम्हें डॉइश पता है? नहीं पता है? इधर से स्टार्ट कर दो. यू हैव ऑल्सो नॉट. वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म. और क्या पता है इसके बारे में? इसको और फ्रेम करो ना प्रॉपरली. हाँ, ट्रांसनेशनल. ट्रांजैक्शनल से थोड़ी स्टार्ट करोगे. पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं ना. वहां से स्टार्ट करोगे. कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज गिवन बाय डर्श. सेकेंड लाइन बताना. तुम्हें क्यों लग रहा है ये स्टार्ट सही है? एक तो जोक कर रहे हो, थोड़ा खुद से पूछा करो कि ये अच्छा स्टार्ट है. तुम्हें लग रहा है ये अच्छा स्टार्ट है? ये तो बॉडी में आएगा इनके हिसाब से. अरे मान लो क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन डॉइश थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, तब क्या करते हैं? लिबरलिज्म से स्टार्ट करते हैं. अरे पहले तो रीडिंग तो करो, खुद से दिमाग में आता है. यू हैव टू रीड. डबल रीडिंग करो. जो पढ़ते हो उसको अप्लाई करो ना. क्या एक अच्छी सी लाइन से स्टार्ट करो. अल्टरनेटिव. अरे इससे और कुछ सिंपल स्टार्ट हो सकता है. थियरी ऑफ आईआर इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक. और आगे नेक्स्ट डॉइश से तो लिंक करोगे. इतना स्पेस है वन ऑफ द और ये सब करने का. डॉइश का खुद से डायरेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हो? ऐसे नहीं कर सकते. इसमें क्या एक्सप्लेन हाउ फार डॉइश मॉडल एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस. इसमें इन्होंने डॉइश मॉडल का नाम दिया है. दिया है? दिया भी दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है. कहाँ दिया है? डॉइश मॉडल का कोई नाम है? डॉइश की थ्योरी कोई नाम है? सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म या कम्युनिकेशन थ्योरी. तो वहीं से क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? डॉइश थ्योरी इज नोन एज is an example of sociological liberalism or also known as communications theory. ऐसे नहीं हो सकता था स्टार्ट कि यूनिवर्स में बहुत सारे देश, उसमें एक अमेरिका में डॉइश रहते थे. इन्होंने ऐसे लिखने वाले थे. हाँ, तो सीधे लिखो ना. एक्सप्लेन हाउ फार डॉइश मॉडल एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि उसके मॉडल का नाम तो बता दो. ठीक है, तो राइट. डॉइश थ्योरी ऑफ या डॉइश थ्योरी इज नोन एज कम्युनिकेशंस थ्योरी एंड एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म. अब सेकेंड लाइन सोच के बताओ. सेकेंड लाइन क्या होगी?
डिफाइन सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, यही लग रहा है ना, तो डिफाइन करो. डिफाइन सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म सेकेंड लाइन में. किसी को पता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म? हाँ, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट मोर एंड मोर इंटरेक्शन. ठीक है, इन्होंने बोला तो लिखने की जरूरत नहीं. ये सही है या कुछ और एक्सप्लेन कर सकते थे? उससे पहले थोड़ा और जेनरिक जा सकते हो. तो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, या क्या लिखा है, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म is a theory of liberalism where the emphasis is on understanding the emergence of security communities फिर लिखो Deutsch has studied regions like Europe, Western Europe, North America, and has shown that there is a qualitative transformation in interstate relations in these regions. Comma, to the extent that security dilemma which has been propounded by realists as inescapable and harsh fact of interstate relations, comma, has become irrelevant. Has become irrelevant. Right? Security community reflects high level of trust comma, and thus provides an alternative to security dilemma. Right? According to Deutsch, security community develops because of high level of communications. अब क्वेश्चन क्या है, हाउ फार डॉयश मॉडल एक्सप्लेन्स द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस. तो इसमें लिखो, राइट, डॉयश मॉडल इज relevant to understand the state of relations among the nations in the Western world. Right? However, it may not be so relevant in non-Western world
right? In non-Western world, for example, South Asia, nations continue to suffer from the security and insecurity dilemma. ठीक है, आसियान नहीं, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, ठीक है. फिर डू यू थिंक प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन हैव ग्रोन स्टेडली इन द पोस्ट कोल्ड वॉर? नो. ठीक है, तो what you can say that the process of interdependence and integration, the process of interdependence and integration has not grown steadily. Interdependence and integration has not grown steadily in post-Cold War trajectory. ठीक है, right? In the initial years, there was greater integration, but since the global financial crisis, there has been a reverse wave even in the Western countries. Right, Brexit and Trump's policies, Trump's America First policy, has resulted into the question mark on the future of globalization itself. ठीक है, तो कोई स्टेडली तो हुआ ही नहीं है. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. कंपेयर social constructivism with realism and neo-realism, sorry, realism and liberalism. Can we call social constructivism as the middle path? तो इसमें पहले बता देना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म emerged in 80s, but has become one of the prominent paradigm at present. Right, its origin in recent years goes back, in recent year goes to the publication of Nicholas Onuf's, O-N-U-F, Nicholas Onuf's book, The World of Our Making. The World of Our Making.
ठीक है, right? The other prominent personalities या scholars are कौन कौन? Alexander Wendt, Nina Tenenwald, Martha Finemore, Finemore, Martha Finemore, right? According to social constructivists, are inspired by the ideas of Italian thinker Vico, who held that the natural world is made by God, but social world is made by humans. Right? They are also inspired by Immanuel Kant, who held that our knowledge gets filtered through our subjective consciousness. ठीक है, अब कंपैरिजन लिखो, राइट? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट्स share following assumptions with realists. Point number 1, state-centric view. Second, anarchy. Third, security dilemma. ठीक है, right? Next, right? However, they differ from realists in following sense. Point number 1, right? Realists claim anarchy as a material condition or as a material fact. Anarchy मतलब एक material fact है, ठीक है, right? Right? According to social constructivists, anarchy leading to the security dilemma or a struggle for power is a social construction. Right? It is a product of a specific culture or perspective of interpreting these facts.
मतलब लिखो राइट, दे आर नॉट material facts, rather social, cultural, ideational facts. ये समझ में आया? एनार्की है, लड़ाई है। एक तो दोनों लोग बिलीव करते हैं एनार्की है, लेकिन रियलिस्ट एनार्की को क्या कहते हैं कि एक फिजिकल मटेरियल कंडीशन है, जैसे सन है, ये सब फिजिकल है, साइंटिफिक सेंस में देखते हैं। एंड दे से दैट नो एनार्की इज अ result of a particular type of a culture in which we are born and brought up. तो मेन डिफरेंस क्या है? एनार्की मटेरियल फैक्ट है या सोशल कंस्ट्रक्शन है? तो अकॉर्डिंग टू देम इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ये डिफरेंस समझ में है? अब नेक्स्ट लिखो राइट, राइट इसी में लिखो राइट, राइट टू कोट एलेक्जेंडर वेंट, anarchy is what? States make of it. Right? Hence he has challenged Kenneth Walt's point of view. Now write Kenneth Walt's point of view. Right, next, another difference lies in the fact that realists are pessimists, known as children of darkness. Right, they don't believe that the nature of international politics, they don't believe that the nature of international politics will ever change. अब नेक्स्ट लिखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट्स are optimists. They suggest that by alternative constructions and regular communications, we can bring the change. Right, right, they believe in power of ideas. Comma, it is the mind and not, or you can say reality is in mind and not in matter. अब लिखो, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लिबरल्स। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लिबरल्स। राइट, राइट, not only social constructivists and liberals, but even liberals and realists share assumptions
that international politics is state-centric, there is anarchy, struggle for power. Right. However, liberals are called as children of light. Because they believe or because they take the enlightened view of human nature. Right, they propose ideas like तो पता है वो सारे democratic peace etc. to overcome the power struggle. Right, thus liberals and social constructivists share the belief in the possibility of peace, and the power of ideas. ठीक है, right? The difference in the liberals and social constructivists is that both liberalism and realism believe in objectivity and are positivistic approaches या neoliberalism को कह सकते हो, positivistic approaches हैं, positivistic approaches या objectivity, whereas social constructivism is a reflectivist theory. ठीक है. Is any difference in social constructivism and postmodernism? क्या डिफरेंस है? पोस्ट मॉडर्निज्म पीस वीस की बातें करते हैं, उससे कोई उनका लेना देना नहीं है, और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी एक मैटा नैरेटिव है, ठीक है, बट पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए ये भी एक थियरी है लाइक अदर थियरीज. पार्डन? was yeah, normative postmodernism has no such concern. ठीक है. So now I think most of the theories you can handle in exam. क्या सीखा? हाँ? Which one? अच्छा ये pardon? Middle path है because it share the features of both the theories. पोस्ट मॉडर्निज्म वाले सिर्फ इतना कहते हैं एवरी थियरी इज अ स्टोरी. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म 100% श्योर है कि इट इज देयर थियरी, मतलब देयर थियरी इज ऑल नॉलेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर कल्चर, वे ऑफ थिंकिंग, ऐसा इनका कहना है. तो अब पोस्ट मॉडर्निस्ट वाले के पास सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जाएगा अपनी थ्योरी लेके, रियलिस्ट जाएगा, लिबरल जाएगा, तो ये लोग तीनों को ही बोल देंगे डिस्कोर्स. फिर इनसे पूछेंगे आप बताओ तो बोलेंगे हमें नहीं पता. तो ये भी एक तरीके का क्या है, मेटा नैरेटिव है या एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसको ये लोग सही समझ रहे हैं.
तो ऐसा भी है. It is like this. It is not necessary for postmodernists. कॉमन यही है कि द ट्रुथ में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कल्चर, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शंस. ठीक है. सो नाउ वन क्वेश्चन यू वर टेलिंग, इसको ओरली करते अगर ज़रूरत. कंपेयरिंग conclusions. While various theories may lead to more or less competing conclusions था ना, compelling conclusions about international relations, none of them is definitely right or wrong. ये हाँ. While various theories may lead to more or less compelling conclusions. लिखो इसका आंसर के, लिखो क्वेश्चन. While various theories may lead to more or less compelling conclusions about international relations, comma, none of them is definitely right or wrong. फिर वही लिखो, क्या लिखोगे? डायनेमिक डिसिप्लिन, डिफरेंट थियरीज. ठीक है. इसका क्या पॉइंट हुआ? डायनेमिक डिसिप्लिन, डिफरेंट थियरीज, और हर थियरी के बारे में लिख दो. यही तो लिखना होगा. ठीक है. फिर none of them is definitely right or wrong. So truth is too complex. It is beyond the capacity of human mind to understand the ultimate truth. And hence, if you take from the postmodernist point of view, there can be different aspects in the, or different aspects of the reality, or there can be multiple. तो ये सब क्या है? मल्टीपल डिस्कोर्सेज हैं. ये लिख पाओगे लास्ट वाला? तो लास्ट में क्या लिखोगे? इसमें यही लिखो कि राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस इज टू कॉम्प्लेक्स and it is beyond the capacity of human mind to understand the ultimate truth. Right, it is like sailing in a bottomless and a borderless sea. Right, none of the theory can claim that it is an absolute, or it is an absolute truth. Right, hence to understand the complex and vast universe of international politics, complex and vast universe of international politics, we need to analyze a particular phenomena from multiple perspectives. Rather than just going by a meta narrative.
अगर ये क्वेश्चन आए, इज मार्क्सिज्म इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म? यस, कैसे? ग्रामसी वैमसी भी तो है। हाँ, लिख सकते हो, मतलब कैसे उसको सेट करोगे वो इम्पोर्टेंट है। लिख सकते हो, मतलब truth is too complex, as suggested by Nietzsche, God is dead, it is not possible to discover or tell the truth, we don't tell, we make the truth। वो तो तुम कैसे, मतलब you have to put forward the, और एक थीम, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आइडिया करेक्ट होना चाहिए। यू कैन एक्सप्रेस इन एंडलेस वेज, लेकिन तुम्हारा जजमेंट राइट होना चाहिए, या तुमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तुम लिख के आना चाहिए। वर्ड्स तो सबके फर्क ही हो जाएंगे, तो उसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे, यू कैन डू दैट। ठीक है, सो इस मार्क्सिज्म इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म कैन बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म, but not the critical school and not the Gramscian school। ये कर लोगे। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स परसीव emphasis on state to state relations as obscuring the more fundamental dynamics of global class relations। लिखो ये क्वेश्चन। Marxist scholars perceive emphasis on state to state relations obscuring the more fundamental dynamics of global class relations। Do you agree? Do you agree में क्या लिखते हो तुम लोग? Yes, I agree। नहीं, मतलब आई वाई नहीं लिखना है, it can be said I agree, ऐसे है। Do you agree? Substantiate your views with appropriate arguments। बताओ, सही है? आंसर तो समझ गया, किस पे है, कौन सी थियोरी लिख सकते हैं? वॉलरस्टीन की, है ना, फंडामेंटल डायनेमिक्स। इसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे? मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स परसीव emphasis on state to state relations obscuring the fundamental dynamics of global class relations। Should we start with realism as a hegemonic discourse? No, क्यों नहीं? रियलिज्म से क्यों नहीं? रियलिज्म क्या ही तो क्रिटिसिज्म है। यही बताना है। मार्क्सिस्ट एम्फेसाइज ऑन स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। इतना स्टेट टू स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे हैं, किसके कारनामे है ये? रियलिस्ट। तो रियलिज्म से ही स्टार्ट करोगे। रियलिज्म इज अ हेजेमोनिक डिस्कोर्स एंड रियलिज्म क्लेम्स itself as a timeless wisdom or the scientific explanation of international politics। And according to the realists, international politics is in the state of anarchy। There is a struggle for power, there is no escape from security dilemma। उसके बाद लेकर के आओ नेक्स्ट पैराग्राफ से मार्क्सिज्म। तो सबसे पहले
realism is a hegemonic discourse claimed as timeless wisdom and the scientific explanation of international politics. ठीक है, अब फिर वो क्या कहते हैं, तो राइट, दे टेक स्टेट सेंट्रिक व्यू, comma, according to them anarchy is the structure of international politics. Giving rise to self-help for survival, right? Power is a means, power is an end. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, राइट, मार्क्सिज्म challenge the realist view of international politics. Right, from Marxist point of view, realism hides rather than reveals. Right, the too much emphasis on state is to divert the attention from the working of capitalism in international sphere. अब नेक्स्ट लिख लो, इमैनुअल वॉलरस्टीन थ्रू हिज वर्ल्ड सिस्टम थियरी has suggested that since 17th century the world system has become economic. उससे पहले political था, it has become economic. Right, it has expanded on the global scale. It has categorized the countries into core, peripheries and semi-peripheries. Right, the capitalist search for profits has been the main factor behind the struggles and wars. Right, we can also give reference to Lenin, who held that the First World War
was war for colonies or an imperialist war? You agree with Marxists? Do you agree? You don't agree. Okay. So write both Marxism and realism can be considered as discourses. Right? International politics is too vast and complex to be understood through a single discourse. Okay? Right? Hence, it requires us to look for the multiple narratives and reject the meta narratives. Right? We can consider international politics as a text as suggested by Derrida, which can have multiple interpretations. होंगे ना? Do you agree? वही कर दो. It is a text to be studied with multiple interpretations, or it is like a bottomless and a borderless sea. So now let us shift to next topic, concepts of international politics. Key concepts. Key concepts में national interest, security, power, balance of power, deterrence. इसमें एक तो टॉपिक ये करो, वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन. कौन सा पेन देना? Why do liberal international theorists believe that peace is not possible in the absence of world government? ये कब दिया मैंने? क्लास में लिखने के लिए आपने एक स्क्रीन लगवाई थी फर्स्ट में. स्क्रीन? अच्छा, अरे वो संग्राम ने दिया, वो छोड़ दो. वो ईरा की तबीयत पूछो. सर गए? अच्छा, उसकी तबीयत पूछो. सो नाउ वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये एक टॉपिक है. तो अब तो ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा पता नहीं. ठीक है, एंड यू हैव टू यूज वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव. वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इस टॉपिक पर आई हैव सीन सम आर्टिकल्स वेयर दीज आर द मेजर इश्यूज. तो उसी को एज अ क्वेश्चन फॉर्म में यू कैन राइट. मतलब अभी किन चीज़ों पर डिबेट चल रही है. राइट? Right, first question, is globalization an instrument to promote capitalism
since the end of Cold War. इसी में लिखो can the current phase of globalization be constructed as an inevitable phase in the evolution of capitalism. Next question लिखो. Pardon? Inevitable phase in the evolution of capitalism. किसका मत फिर से अभी बता रहे, पहले क्वेश्चंस तो लिख लो. लिखो. Right, imperialism, an inevitable byproduct of capitalism, has earned a new imperialism, a byproduct of capitalism, has earned a new lease of life under globalization. Inverted commas में लिखो और critically examine. Next question लिखो. What the recent economic crisis tells us about the nature of global capitalism. अगर इसको फर्दर पढ़ना है तो हेवुड की जो नई बुक है उसमें ये एक टॉपिक एक दिया हुआ है, कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन करके. so, उससे ही आई हैव कलेक्टेड द मटेरियल, कर सकते हो. ग्लोबल कैपिटलिज्म, what the recent economic crisis tells about the nature of global capitalism. ये वहीं से क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. how the notions of state, nation, ethnicity have acquired fresh meanings in the shadow of close association between capitalism and globalization. अब इसमें कौन सा आता है? कौन सा क्वेश्चन लगता है आता है? तुमको कौन सा आता है? फर्स्ट वाला हो जाएगा. करो, बताओ. Is globalization an instrument to promote capitalism since the end of Cold War? Debatable कहाँ है? मान लो ये नहीं है तो क्या है बताओ. ग्लोबलाइजेशन किसने प्रमोट किया है? वेस्टर्न कंट्रीज ने. तो मतलब कैपिटलिज्म को मोर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए नाम चेंज कर दिया ना.
इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन एज सच कहेंगे तो इट इज एन एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट, बट ग्लोबलाइजेशन as a concept has been appropriated by neoliberals. So जो एक meta narrative about globalization तो वही है, integration of markets, movement of people, capital, है? हाँ, इस globalization, ये कौन से ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं? सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और कोई ग्लोबलाइजेशन चल रहा है? सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कौन सा ग्लोबलाइजेशन चल रहा है? नियो लिबरल ही तो चल रहा है, थोड़ा बहुत वो भी चल रहा है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म, ठीक है, तो वो वही है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी वर्सेस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। Can the current phase be constituted as an inevitable phase in the evolution of capitalism? Capitalism is expansionist by nature or not? What Marx said, search for profit, force bourgeois to nestle everywhere, settle everywhere. तो ये कर पाओगे तुम लोग? फिर है inevitable phase है ना, क्योंकि capitalism moves by profit. For profit you need to have bigger market. रिट्रीट भी इनएविटेबल फेज है, क्योंकि कैपिटलिज्म इज कॉन्ट्रडिक्टरी सिस्टम, बूम्स एंड बर्स्ट होते ही है ना, तो रिट्रीट को भी तुम कह सकते हो इनएविटेबल। नेक्स्ट, imperialism is a inevitable product of capitalism, has earned a new lease of life under globalization. ग्लोबलाइजेशन के कारण इंपीरियलिज्म आया। किसका इंपीरियलिज्म? कहाँ? MNCs का। इंपीरियलिज्म इज बिल्डिंग एम्पायर्स, बिल्डिंग कॉलोनीज, ठीक है, इनएविटेबल प्रोडक्ट। कहाँ किसका एम्पायर बना आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? यूएस का। तो यूएस के कुछ एम्पायर्स, इट इज लाइक अ यूएस एम्पायर, और यूएस एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए यूएस ने वॉर्स भी करी, इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, और उसका जस्टिफिकेशन किस फॉर्म में है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी ये सब चीज़ें क्या है? ग्लोबलाइजेशन के ही वैल्यूज है ना, ठीक है, तो उससे लिंक करो। अर्न अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, तो न्यू लीज ऑफ लाइफ तो है, बट देर इज ऑल्सो अ बैकलैश इन द फॉर्म ऑफ इस्लामिक स्टेट, this that, the protests, anti-globalization movements. What the recent economic crisis tells about the nature of global capitalism? Recent crisis, nature of global capitalism. This global capitalism has been managed by, or it was a stage of finance capitalism. Okay, and state has not kept watch on the financial institutions, resulting into this type of a situation. So recent economic crisis tells, or basically reveals, the contradictions which are inherent in capitalism. So capitalism give rise to what? The concentration of wealth, inequalities, as Thomas Piketty's book also gives some data, beta ऐसे लिख सकते हो, how the notions of state, nation, ethnicity has acquired fresh meanings in the shadow of close associations of capitalism and globalization. Capitalism or globalization has undermined the importance, or it has increased the importance. बोथ हो गया। फर्स्ट वे में तो अंडरमाइन हो गया, बट
fission and fusion, both processes, जिसमें for example we can say in Middle East, ठीक है, the clash of civilization, ethnicity against, or it is a rejection of cultural imperialism. There has been a talk of Asian values. ये सब concepts डाल सकते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है. तो अब ये जितना पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन में, मल्टीकल्चरलिज्म, एशियन वैल्यूज़, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करूँ, ठीक है. तो अब उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ये सारे जो डिस्कशंस हैं सब तो मार्क्सिस्ट एनालिसिस है ना ग्लोबलाइजेशन की. तो कुछ कमेंट्स या कुछ आइडियाज़ लिख लो, देन वी विल राइट आंसर. बाकी भी हम लोगों ने किसी और टॉपिक में करे होंगे ग्लोबलाइजेशन के, अरुंधति रॉय और इन सब चीज़ों का, बिकॉज शी ऑल्सो लिंक्स इट विद कैपिटलिज्म. तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो ग्लोबलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म से लिंक्ड हैं, दैट आई एम गिविंग. ओके, व्हाट, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? How the development of global capitalism has changed the nature of socialist economies and developing societies. तो ये तो comparative politics का हो गया. Socialist economies, shock therapy, developing societies, ये तो उससे होगा. फिलहाल content क्या क्या लिख सकते हैं, right? एक तो so basically views on relation between capitalism and globalization. Capitalism and globalization. इसमें एक लिखो समीर अमीन. और इनकी बुक, राइट द टाइटल ऑफ हिज बुक, कैपिटलिज्म इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. In this book he has analyzed French neo-colonialism, in West African countries, and how it has created unrest and supported puppet regimes. Puppet regimes in these countries, या जो भी थे rulers. Now next है इमैनुअल वॉलरिस्टीन एंड A.G. फ्रैंक, आंद्र गुंडर फ्रैंक, A.G. फ्रैंक. ठीक है, तो राइट, दे हैव एनालाइज्ड कैपिटलिज्म इन द फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड सिस्टम. फिर नेक्स्ट लिखो प्रेजेंट क्राइसिस शो द चैलेंजेस in the management of
word capitalist system. Next लिखो right, the capitalist system has not been able to evolve a political organization beyond nation state, has not been able to evolve the political organization beyond nation state. Next, एक और लिखो right, Western countries are not able to reconcile with competitive peripheral zones in the third world. एक्चुअली ये तीनों का है, समीर अमीन, इमानुअल वॉलरस्टीन, एजी फ्रैंक, तीनों का इस तरीके का एनालिसिस है. मतलब रिकंसाइल विद द राइज ऑफ ब्रिक्स, ये सब. और ब्रिक्स की हालत बिगाड़ने के लिए ही था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. ठीक है. नेक्स्ट, एक और स्कॉलर लिखो, हामिद हुसैनी, HAMEED, हामिद हुसैनी, HOSSEINI. इनकी बुक का नाम है ऑल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन, सॉरी ऑल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन. यस. इनके की पॉइंट्स भी वही हैं. राइट, पॉइंट नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन is a highly ambiguous concept. Next, globalization is appropriated by the neoliberals. Next, we tend to look at globalization in a reductionist way. That is nothing more than new brand of capitalism. Next, capitalism has dominated the process of current globalization. Next, economic, right, the present economic globalization is selective. मतलब कुछ ही इंडस्ट्रीज का ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैव एंडेड आल्सो. नेक्स्ट, वर्ल्ड इज नाइदर फुली nor fairly integrated. Neither fully nor fairly integrated. फिर present globalization
reflect the growing power of MNCs. And the colossal, COLOSSAL, colossal growth of financial markets, जिसको बोलते हैं कैसीनो कैपिटलिज्म. कैसीनो कैपिटलिज्म, एक और स्कॉलर है, उन्होंने टर्म दिया है. ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? बिकॉज रियल प्रोडक्शन नहीं है. इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है? शेयर मार्केट्स, आर्टिफिशियल सारी ग्रोथ है, इसीलिए बबल है. तो विच टाइप ऑफ कैपिटलिज्म इट हैज गिवन राइज? कैसीनो कैपिटलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, चॉम्स्की. व्हाट क्वेश्चन? अब लिखो चॉम्स्की. मतलब भाई अब कैपिटलिज्म एट अ ग्लोबल स्टेज और ग्लोबलाइजेशन को मैनेज करने के लिए उस तरीके का कोई वर्ड, गवर्नमेंट, कोई सिस्टम भी तो आना चाहिए. है यूएन तो डिफंक्ट टाइप का है, उस टाइप में कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं लोगों का. तो उसी मतलब जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हुई है तो पैरेलल पॉलिटिकल नहीं हो पाई, इसीलिए कैपिटलिज्म का जो मैनेजमेंट हो सकता था वो नहीं हो पाया. ठीक है. और इट हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय एमएनसीज. फिर यही है ग्लोबलाइजेशन, यू शुड नॉट जस्ट सी इकोनॉमिक, और सिर्फ यही एक मॉडल नहीं है, लेकिन ये अब डोमिनेंट मॉडल बन चुका है. वी एसोसिएट ग्लोबलाइजेशन विद दिस. तो अगर ग्लोबलाइजेशन प्रोसीड होता तो उसके साथ साथ वैसा सोशल पॉलिटिकल evolution should have happened, which has not happened. That globalization could have been managed. Okay. अब चॉम्स्की का भी वही है, राइट? फर्स्ट, globalization has been appropriated by the powerful that now it means a specific form of integration. Next लिखो, right? It is based on एक मिनट, चलो इसको रखो एक मिनट. आई एम कमिंग, जस्ट अ मिनट. चलो.
हेलो। हाँ, अब ठीक लग रहा है। अभी मैम आ रही है 5 मिनट्स में, एंड प्लीज़ कीप। कितने खुश हो रहे हैं, है ना? है ना? 5 मिनट्स में आ रही है मैम, सो प्लीज़ बी साइलेंट, बहुत ज़्यादा शोर ना करें। ओके, थैंक्स। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशंस। और हाँ, आप प्लीज़ बार बार बाहर ना जाएं। ठीक है, मालूम है ब्रेक मिल गया है तो सब कुछ कर लेना है अभी, है ना? तो 5 मिनट में ही मैम आ रही है बस। Right, present globalization focus on the rights of investors. Recognition of rights of investors. Investors' rights are important, not people's rights. Based on the protection of, importance of the rights of investors at the cost of people. Right, next. Right, any other form of globalization or solidarity is being described as anti-global. ठीक है, एक लिखो नाओमी क्लीन, NAOMI, इनका भी नाम काफी आता है ग्लोबलाइजेशन के। NAOMI,
clean, K-L-E-I-N, Naomi Klein. Right, she has given the concept of disaster capitalism. और इनकी बुक का नाम है द शॉक डॉक्ट्रिन. colon the shock doctrine, disaster capitalism. मतलब the capitalism or globalization has not been a choice. It has been what? It has been forced. Okay, so taking the advantage of the situations prevailing, so it has been forced. That is why it is called as disaster capitalism. ठीक है, तो what you can write this? इनका view क्या है, right? Present globalization is a deliberate strategy of Chicago boys. Chicago boys. शिकागो स्कूल जो मिल्टन फ्रीडमैन इन सब के इकोनॉमिस्ट है. शिकागो बॉयज ब्रैकेट में लिख दो फॉलोअर्स ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन टू पुश द कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज exploiting the situations. Next लिखो Suzanne Strange. Suzanne Strange. She has given the concept of casino capitalism. Which points towards the massive flow of money in share markets, without actual growth at the ground level. वॉलरस्टीन का एक और लिखो, वॉलरस्टीन का, राइट. Economic globalization is uneven, hierarchical, and a game of winners and losers. Winners and losers. ये सब कुछ हामिद चॉम्स्की. एक और लिखो रॉबर्ट कॉक्स. इन्होंने टर्म दिया है हाइपर लिबरल ग्लोबल कैपिटलिज्म. हाइपर लिबरल ग्लोबल कैपिटलिज्म. फिर इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? डेमोक्रेटिक डेफिसिट, नेक्स्ट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट,
जिसका मतलब है स्टेट रिस्पॉन्डिंग टू इन्वेस्टर्स रादर देन पीपल. State responding to investors rather than people. Next, increased environmental degradation. Surrender of state to the corporate class. ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं. बाकी मैंने लिखाया भी था ना, प्रताप भानु मेहता, एट बेस्ट इट इज़ लाइक दिस दैट, वो सब भी ऐड कर सकते हो. फेमिनिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उनका जो क्रिटिसिज्म ऑफ नियो लिबरल है सेम है, एडवर्सली इम्पैक्टेड वुमेन. तो अब इस क्वेश्चंस को देखो. जैसे पहला क्वेश्चन क्या था? Is globalization an instrument to promote capitalism since the end of Cold War? And can globalization be constructed as an important stage in evolution of capitalism? ठीक है, तो इसमें क्या कैसे स्टार्ट करूँ? तो फर्स्ट you can start with the view that point number 1, globalization is a ambiguous concept. Comma, there can be multiple meanings to it. फिर second, as suggested by Chomsky, present globalization as a term is being appropriated by the powerful class. Full stop. Present globalization is neoliberal. ठीक है. Next, right, at present, यार लिखो next, globalization can have multiple dimensions: economic, political, cultural, right. However, the present globalization is hardly anything more than the integration of markets. Next लिखो, right, as suggested by Wallerstein, Samir Amin, the present globalization is facing challenges because it could not evolve a corresponding governance model. ठीक है. फिर next, right, the inherent idea in the present globalization
is expansion of capitalism. Comma, rolling back of the state. Comma, ideas inherent in Washington consensus. Okay, next, right, we can say that the present globalization is an instrument to promote capitalism and inevitable stage in the evolution of capitalism. Right, as suggested by Marx, capitalism is expansionist. डैश करके लिख लो, सर्च फॉर मार्केट्स या सर्च फॉर प्रॉफिट्स विल फोर्स bourgeois to settle everywhere and nestle everywhere. Nestle, Nestle, nestle everywhere. Next point, right, present globalization, yeah, present capitalism is finance capitalism. Finance capitalism. Comma, in the words of Suzanne Strange, casino capitalism. Comma, in the words of Naomi Klein, the disaster capitalism. डिजास्टर कैपिटलिज्म, इसको एक्सप्लेन भी कर देना थोड़ा सा. कैसिनो कैपिटलिज्म मतलब फाइनेंस, नो रियल ग्रोथ. डिजास्टर कैपिटलिज्म, नॉट चॉइस बट फोर्स्ड. एंड इन द वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट कॉक्स, हाइपर लिबरल ग्लोबल कैपिटलिज्म. To write the features of present model is undermining democracy, comma, state becoming the protector of the rights of corporates, at the cost of its own people. फिर लिखो, inequality is inherent in capitalism. Right, present capitalism has given rise to interstate and intrastate inequalities.
as demonstrated by Thomas Piketty, right? The backlash against capitalism, sorry, the backlash against global capitalism has given rise to clash of civilizations on one hand and rising protectionism on the other hand. ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाए, सब वर्ड्स याद रखो. कैसीनो कैपिटलिज्म मतलब अंडरलाइन करके, डिजास्टर कैपिटलिज्म, हाइपर ग्लोबल कैपिटलिज्म, इट इज़ बीइंग एप्रोप्रिएटेड. अब ये तो ओपन एंडेड टाइप का क्वेश्चन रहता है. हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहे हैं ना. तुमको स्कॉलर्स की एनालिसिस लिखनी है थियोरी पेपर में. खुद को स्कॉलर अपने आप से डिक्लेयर करके नहीं लिखना है. थियोरी सेक्शन में मार्क्स क्यों नहीं आते? अगर थियोरी में थियोरी नहीं लिखोगे तो तुमको वो एक एरिया है, सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन, तो एक्सपेक्टेड है कि इसमें जो वर्क है उस या जो स्कॉलर्स हैं उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए तुम्हें, या उनके की टर्म्स की अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है, तो अब ये तो किस फॉर्म में आएगा, लेकिन कैपिटलिज्म ग्लोबलाइजेशन इस पर इन लोगों ने वर्क किया है. तो अपने आंसर को थोड़ा ऑथेंटिक बनाने के लिए कि पढ़ के लिखा है, पढ़ा है तभी पता है इन लोगों के नाम है, तो यही इम्प्रेशन बस देना है. तो वरना तो जनरल कोई भी क्वेश्चन जनरली भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन सा थिंकर कहाँ फिट होता है और किसके आइडियाज को करके ऐसे लगेगा कि ये सिर्फ जस्ट सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से नहीं लिख रहे हैं. तो ये वाला टॉपिक कराने का बेसिक पर्पस था कि तुमको ये बस पता होना चाहिए. इसके साथ साथ मतलब अरुंधति रॉय वाला भी था, रिमोटली कंट्रोल्ड, वो भी डाल सकते हो. तो ये वर्ड्स ये सब दिए हुए हैं एंड्रू हेवुड के टॉपिक्स में, उसी बुक में है ये सारे थिंकर, तो उससे की आइडियाज निकाल के मैंने दे दिया. क्वेश्चन है क्या प्रॉस्पेरिटी पे? जब क्वेश्चन ही नहीं है कि कैपिटलिज्म हैज लेड टू प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल, क्वेश्चन ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज एन इनएविटेबल फिनोमिना ऑफ कैपिटलिज्म. तो जो कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखोगे? कुछ है लिखने के लिए? मार्क्सिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिख सकते हो आंसर. और प्रॉस्पेरिटी, फायदा, नुकसान, कहीं स्कोप है लिखने का? तो हमको क्या दिखाना है? कैपिटलिज्म. अब इसमें जो नए नए कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन है कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन मेन क्या है? फाइनेंस कैपिटलिज्म. लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रियल ग्रोथ कहाँ है? वेयर इज अ रियल ग्रोथ? तो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है. ये जो टॉपिक्स लिखाने का पर्पस ये था ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म, पर अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो तुमको ये पता होना चाहिए कि दीज आर द एक्सपर्ट्स हु हैव रिटन एंड दीज आर देयर व्यूज एंड टर्म्स. तो घर पे जाके मार्कर से सिर्फ टर्म और व्यूज हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखो और वही याद करो बस.
बाकी बातें बनाओ, ठीक है? इज दिस क्लियर? जैसे लिस्ट एक बॉक्स बना लिया करो जा करके, अभी और लिखना है तो ऐसे कैसे खत्म होगा? एक क्वेश्चन तो लिख लो। नहीं, इसमें कोई था कैन करंट फेज हो गया, इंपीरियलिज्म, हाउ नेशन, अगर ये आए व्हाट रीसेंट क्राइसिस टेल्स अबाउट नेचर ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, कॉन्ट्रडिक्टरी, इनइक्वालिटीज, कैसीनो कैपिटलिज्म, लैक ऑफ ग्रोथ, डिजास्टर कैपिटलिज्म, फिर वही वर्ड से लिख सकते हो आंसर, ठीक है? मतलब जितने भी तरह के उन क्वेश्चन बना लो एग्जामिनर, ठीक है? आंसर इसी में रोटेट होगा। तुम्हारा ऐसे ही वो होना चाहिए कि आई नो दीज टर्म्स, बाकी बनाएंगे वहाँ पे जाके, ठीक है? और हाईलाइट करेंगे जो थिंकर्स विंकर है, जैसे हमने जो बनाया है वो दिखने की जगह वो सब दिख के काम हो जाए। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हाउ नोशंस ऑफ स्टेट, नेशन एंड एथनिसिटी एक्वायर्ड फ्रेश मीनिंग्स। कुछ तो दिमाग तो लगाओ, पहले बताओ तो। मल्टी कल्चरलिज्म लिखोगे, हाउ नोशंस ऑफ स्टेट, नेशन, ethnicity acquired fresh meanings in the shadow of close association between capitalism and globalization. Capitalism, globalization, मान लो उससे यूएस को हो गया नुकसान, तो यूएस वालों को एकदम से नेशन वेशन याद आ गया, ठीक है? एथनिसिटी कैसे लिखोगे? आंसर लिखो, अब अपने आप ही लिखो ये आंसर, अपने आप अपनी कॉपी में लिखो, फिर हम बताते हैं। वैसे मत लिखो तुम लोग, ठीक है? स्टार्ट कहाँ से करोगे? ओरली बताओ। कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, और क्वेश्चन क्या है? गिविंग राइज टू न्यू मीनिंग्स या न्यू इम्पेटस टू ऑल दीज थिंग्स। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, फर्स्ट लाइन बताओ। अभी तक फर्स्ट लाइन नहीं बता पाते तुम। अनइक्वल डेवलपमेंट, तो सबसे पहली बात लिखो, ग्लोबलाइजेशन is a ambiguous term, can have multiple models, but the present globalization is appropriated by the neoliberals, ब्रैकेट में लिख दो चॉम्स्की, and so it is described as integration of markets, the movement of people, movement of goods, capital, people and ideas. ठीक है? फिर नेक्स्ट इसको और डिफाइन कर दो, राइट? ग्लोबलाइजेशन has given rise to the contradictory processes
integration and disintegration, fission and fusion, right? Like all other phenomena, globalization also has the spatial and temporal dimensions. Spatial and temporal dimensions. Right, right. For example, on one hand, we see regional integration, for example, in Southeast Asia. On the other hand, we have seen the rise of intra-state conflicts. Right? If globalization has promoted homogenization, in the form of expansion of liberal values, it has also led to the impression of cultural imperialism, resulting into calls for Asian values, or the rise of Islamic State, right? It has been suggested that, it has been suggested by Chomsky that states of the Western countries like USA will even go to the extent of declaring war to force people to open the markets. Right? USA's policies in Afghanistan, Iraq, has generated huge resentment expressed in the form of clash of civilizations. फिर भाई लिख सकते हो, right? The geopolitics of Middle East guided by the aims of US hegemony has destabilized all regions in the world. Right?
right? It has become difficult for Europe to continue with the liberal values, right, as evident in anti anti-migrant sentiments, the rise of right, and so on. मतलब इसको तो एक्सप्लेन कर सकते हो अलग अलग जगह कैसे कैसे स्टेट प्रोटेक्शनिज्म या यूएसए अनेबल टू रिकंसाइल द राइज ऑफ पेरिफेरीज is going for the reversal of globalization, going for America first policy. ठीक है, बस fine. So next we'll do in next class. कोई कंफ्यूजन लग रहा है सब क्या कर रहे क्यों कर रहे हैं? इतने सारे नोट्स हैं, 8-10 रजिस्टर हैं, कुछ लोगों को तो लग रहा होगा ना है? तो यही याद करना एग्जाम के लिए अभी है? हाँ, यही इसी पे कीवर्ड्स इसी को याद रखना है ना, वो तो समझ के लिए है। नहीं, ईरा के